Hello dear students, in last lecture section E, question number 3 is completed. Now next for question number 4. The information of marks obtained by 220 students of college is given below. यानी कि number of students n is given 220. Find the quartiles division of the marks obtained by the students. Underline quartiles division, it means QD find out. यदि आपको quartiles division find करना है तो third column always CF. Here 2 row is given. In first row class and second number of student is given. So first 2 class as it is first 2 and third is CF. Okay. So 10 line 3 column draw it. First 2 row write in first 2 column. Marks 0 to 9 with type inclusive type of classes is given. Next 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 and last 50 or more. It means open-ended classes is given. Last write down total. In second column number of students. Is denoted by F, our frequency. 30, 50, 64, 42, 29 and last 5. Total in question given 220 student. Check it. लास्ट हम CF कॉलम बनाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 30 plus 50, 80 plus 64, 144 plus 42, 186 plus 29, 215 plus 5. Clear? Now next आपको क्या बोला है? Find the quartiles division. Q1 यानी कि class of Q1 find out first of all. Class of Q1 is equal to value of n by 2 the observation. Q n by 2 the continue classes is given. Value of n by 4th quartiles 4 part करते हैं, so n by 4th observation. Now next step n number of student is 220. Now next step value of 220 by 4th observation. Use the calculator.
220 by 455. Value of 55th observation. So check it in last CF column 55 including in 80, and that class is 10 to 19, but in preceding class lower limit is 9, and class of Q1 lower limit is 10 and preceding class upper limit is 9. Both are different. N is 0.5 less, addition by 2. Therefore class of Q1 is equal to 10 to 19. लोअर लिमिट आपकी क्या हुई क्लास की? L इज इक्वल टू 9.5, N by 4 55, CF preceding class cumulative frequency 3030, F frequency of that class 5050, and C class length. Both the limit are countable, lower and upper. So 19 minus 10 plus 1 10. Check it. Both limit are countable, lower and upper. Now next write the formula. Q1 is equal to L plus N by 4 minus CF divided by F into C. Now next step, L lower boundary point 9.5, N by 4 55 minus CF 3030 divided by F 5050 into C. Class length is 10. Now next step, 9.5 plus 55 minus 30, 25 into 10 by 50, 9.5 plus 25 into 10, 250 by 50, 5, 9.5 plus 5, 14.5. First quartiles for the given distribution is 1 for 14.5. Now next find the third quartiles, Q3. So class of Q3 is equal to value of 3 in bracket n by 4th observation. Okay, now next step, n by 2 already find out 55, so directly value putting. Next step, value of 3 in bracket 55 the observation. Now next step, value of 165th observation. Check it in your table, last column CF 165 including in 186, and that class is 30 to 39. So class of Q3 lower limit is 30 and preceding class upper limit is 29. Both are different. So using lower boundary point formula, given that of class lower limit plus preceding class upper limit divided by 2, it means addition by 2. Now next step, therefore class of Q3 is equal to 30 to 39. Now next, lower limit of that class 29.5, 3n by 4 165, CF preceding class cumulative frequency is 144, F frequency of that class 42, and class length is 10. Lower limit, upper limit both are countable.
Now next step, write the formula for Q3 is equal to L plus 3n by 4 minus CF divided by F into C. Now next step, L lower limit 29.5 plus 3n by 4 165 minus CF 144 divided by F 42 into class length C is 10. Now next step, 29.5 plus difference find out, 165 minus 144, 21 into 10 by 42, 29.5 plus 21 into 10, 210 by 42. Your answer is 5. Addition both the value, 34.5. So given distribution third quartiles is 34.5. Next, find the quartiles division. QD find out. So using formula for QD, so quartiles division is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. So value of Q3 34.5 minus value of Q1 14.5 divided by 2. So numerator difference find out, 20 by 2 for quartiles division for given distribution is 10. Now you are completed for your question number 4. Next, in question number 5, now next, goals scored by two teams in football session are as follow. Which team is more consistent in its game? Underline more consistent. अब more consistent हो, more variation, तो using CV coefficient of variation आपको find करना पड़ेगा. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फार्मूला S डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100, यानी कि आपको टू वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मीन. हियर टू टीम गिवन, तो दोनों टीमों के लिए दो टेबल बनाने पड़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीम ए एक्स एफ दो दिए, थर्ड कॉलम क्या बनाएंगे एफ एक्स एंड फोर्थ कॉलम एफ एक्स स्क्वायर, यानी 4 एंड 4 8 कॉलम. अब दोनों कंबाइंड बनाने हो तो 7 कॉलम में कंप्लीट हो जाएगा. ओके, किस तरह से ड्रॉ करेंगे आप 7 कॉलम, यहाँ पे ध्यान रखना. टेन लाइन, okay. Now fx square,
f fx स्क्वायर। फिर से उसी तरह से नेक्स्ट टू कॉलम एफ एक्स एंड एफ एक्स स्क्वायर। First column, number of goals scored by a football match is considered by X. Second column, write down team A, and third column team B. First X, write down 0 to 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Last write down total. Under the second column team A, first column write down frequency, यानी कि number of football matches played is denoted by F. 15, 10, 7, 5, 3, 2. Under the team B, in first column write down frequency F. 20, 10, 5, 4, 2, 1. Okay. Now next use the calci. First of all, team A frequency total find out. 15 plus 10 plus 7 plus 5 plus 3 plus 2. Number of football matches play 42. Now next column fx, multiplication of x into f. So 0 into 15, 0, 1 into 10, 2 into 7, 3 into 5, 4 into 3 and 5 into 2. Total is find out sigma fx. 10 plus 14 plus 15 plus 12 plus 10, 61. Same to same team B. Frequency total find out. 20 plus 10 plus 5 plus 4 plus 2 plus 1, total n 42 matches. Now next column find out fx, x into f. 0 into 20, 1 into 10, 2 into 5, 3 into 4, 4 into 2 and last 5 into 1. Total is denoted by sigma fx. Find out total. 10 plus 10 plus 12 plus 8 plus 5, 45. Now under the team A, last column fx square find out. fx square means fx into x. fx जो है उसका मल्टीप्लिकेशन x के साथ. 0 into 0, 1 into 10, 2 into 14, 3 into 15, 4 into 12, 5 into 10,
total is denoted by sigma fx square. Find out 10 plus 28 plus 45 plus 48 plus 50, 181. Now next, under the team B, last column, find out fx square, fx into x, fx into x, 0 into 0, 1 into 10, 2 into 10, 3 into 12, 4 into 8, and last 5 into 5. Total is denoted by sigma fx square. 10 plus 20 plus 36 plus 32 plus 25, 123. Now next, first find out under the team A mean. Team A. First find out mean. X bar is equal to sigma fx by n. Under the team A, second column total sigma fx 61 and first column total n 42. 61 by 42. Your answer is 1.4523. Approximate your answer is 1.45. Okay. Now next, find out standard deviation. S is equal to in root sigma fx square by n minus in bracket sigma fx by n whole square. Now next step, sigma fx square under the team A, third column, total 181 and 42 minus sigma fx 61 by 42 whole square. Now next step, 181 divide by 42, 4.3095 minus 61 by 42, 1.4528 into is equal to 2.1094. जो डिजिट है उसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंस फाइंड आउट. 4.3095 minus 2.1094 is equal to 2.2001. Okay. Now next step, out of root 1.4833, last answer 1.48. Standard deviation for the team A. Now next, find out CV, coefficient of variation. Okay, coefficient of variation formula S by X bar. Now next step, coefficient of variation is equal to S divided by X bar into 100. 1.48 divided by
1.45 multiplied by 100, 1.48 divided by 1.45 into 100. Your answer is 102.068 यानी कि 07. मैं यहीं पे राइट कर देता हूँ. CV is equal to 102.0689. So last approximate answer 102.07%. Okay. Now next, same to same. Team B find out. First find out mean. X bar is equal to sigma fx by n. Under the team B, second column total fx 45. Number of observation as it is 42. 45 by 42. 45 divided by 42. 1.0714. 1.0714. So approximate mean is 1.07 for the team B. Now next, find out standard deviation. Same formula used for team A. S is equal to in root sigma fx square by n minus sigma fx by n whole square. Now next step, putting value under the team A last column, sigma fx square total 123 divide by 42 minus sigma fx 45 divide by 42 whole square. Now next step, in root 123 by 42, 2.9286 minus 45 by 42 into is equal to whole square 1.1480. Okay. Now next find out difference. 2.9286 minus 1.1480, 1.7806, and out of root 1.3344. Approximate standard deviation for team B 1.33. And last, find the coefficient of variation. CV find out. So coefficient of variation is equal to S divided by X bar into 100. Value of S 1.33 divide by value of X bar 1.07 into 100. 1.33 divided by 1.07 into 100. Your answer is 124.30 approximate. Okay, आप एक स्टेप राइट कर सकते हो एक्स्ट्रा. सो CV इज 124.30. आपको क्या क्वेश्चन में पूछा था? विच बेस्टमेंट इज मोर कंसिस्टेंट, सॉरी विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट. तो क्या आएगा? जिस टीम का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, यानी कि टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट कंपेयर्ड टू टीम बी. लास्ट में इंटरप्रिटेशन राइट डाउन. टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट
compared to team B. Now next, in question number 6. For sequence of 100 observation, the mean and standard deviation are 40 and 10 respectively. Okay, sequence of 100 observation यानी कि n is given 100, mean and standard deviation x bar and s is given. In calculating this measure, two observations were taken as 30 and 70 instead of 3 and 27 by mistake. ओके क्या किया है, 30 एंड 70 की प्लेस पे बाय मिस्टेक क्या रहा है, एम यूज़ कर लिया 3 एंड 27 यानी कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन किया है आपका 30 30 एंड 70 एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज 3 एंड 27. फाइंड द करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन. ओके, सो फाइंड आउट first of all करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन आपको फाइंड करना है. Question number 6. N number of observation is given 100. Now next, mean x bar is given 4040 and standard deviation is 10. Okay. नेक्स्ट आपको क्या बोला है, टू ऑब्जर्वेशन वेयर टेकन एज 30 एंड 70 इंस्टेड ऑफ 3 एंड 27 बाय मिस्टेक. ओके, टू ऑब्जर्वेशन क्या है करेक्ट एंड टू ऑब्जर्वेशन आर रॉन्ग. सो राइट डाउन हियर करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रॉन्ग ऑब्जर्वेशन. ओके, 30 एंड 70 इंस्टेड ऑफ 3 एंड 27 यानी कि करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, तो 3 एंड 27. ओके, 3 एंड 27 आपका क्या है करेक्ट ऑब्जर्वेशन है. डन. तो ये राइट डाउन करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज 3 एंड रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या है जो आपको क्वेश्चन में दिया है. फाइंड द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन. नहीं पता चले तो हर हमेशा याद रखना 30 एंड 70 इंस्टेड ऑफ 3 एंड 27 आफ्टर इंस्टेड ऑफ जो दिया हो वो डिजिट आपका करेक्ट रहेगा एंड बिफोर इंस्टेड ऑफ जो दिया हो आपका रॉन्ग रहेगा. जिसको नहीं पता उसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ. इंस्टेड ऑफ आफ्टर इंस्टेड ऑफ इज अ करेक्ट वैल्यू ऑलवेज. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अब करेक्ट ऑब्जर्वेशन ले हमें क्या फाइंड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स फाइंड आउट. सो राइट डाउन फॉर्मूला फॉर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन. एक्स बार 40 is given, sigma x is not given, n 100. डिनोमिनेटर से अपोजिट साइड मल्टीप्लीकेशन 40 into 100 is equal to sigma x. Therefore sigma x is equal to 4000. टोटल मिल गया हमें 100 ऑब्जर्वेशन का, टोटल 4000. उसमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड करो, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लेस कर दो, यानी कि करेक्ट सिग्मा एक्स फाइंड हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट लाइन, करेक्ट
sigma x is equal to sigma x less wrong observation plus correct observation. Sigma x 4000, wrong observation 30 plus 70, एडिशन करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन 3 plus 27 वो ऐड करेंगे. नाउ नेक्स्ट है 4000, 30 plus 70 100, 3 plus 27 30, 100 लेस करो 30 ऐड करो. सो यार आंसर इज 3930. check it total. correct sigma x 3930. now find out correct mean. formula x bar is equal to sigma x by n. यहाँ पे कौन सा सिग्मा एक्स लेंगे हम, करेक्ट मीन फाइंड करेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स हम राइट करेंगे 3930 n as it is 2 observation less 2 observation add 100 less 2 plus 2 as it is number of frequency observation. So your correct mean is 39.3. clear. नाउ नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन. स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए क्या फाइंड करेंगे पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, सॉरी हियर ओनली फॉर एक्स गिवन, सो सिग्मा एक्स फाइंड आउट. तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, एस इज इक्वल टू इन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन इन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट एस इज गिवन 10 in root sigma x square not given and 100 x bar यानी कि old x bar 40 होल स्क्वायर. रूट निकालना हो तो रूल्स क्या है, अपोजिट साइड ऑल द वैल्यू स्क्वायर. तो ये 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 100 लेस 40 स्क्वायर 1600. रूल्स अप्लाई करो, माइनस 1600 अपोजिट साइड प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 1600 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 100 डिनोमिनेटर्स में, अपोजिट साइड ट्रांसफर करनी, न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन. सो 100 प्लस 1600. नेक्स्ट है 1700 मल्टीप्लाई बाय 100 is equal to sigma x square. Therefore sigma x square is equal to 1,70,000. क्लियर. अब जिस तरह से हमने सिग्मा x फाइंड किया था करेक्ट, उसी तरह के करेक्ट सिग्मा x स्क्वायर फाइंड करेंगे. रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर माइनस एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर प्लस. नाउ नेक्स्ट है correct sigma x square is equal to sigma x square less wrong observation square plus correct observation square. So sigma x square 1,70,000 minus in bracket wrong observation 30 and 70 square, 30 square plus 70 square plus in another bracket correct observation 3 and 7, 3 square plus 7 square. Now next step 1,70,000 and minus 30 square 900 plus 70 square 1900 plus 3 square 9 plus
yeah, here my mistake, 27 whole square है. Okay, so 27 whole square, check it, 729. Now next, 1,70,000 minus 5,800 plus 738. 1,70,000 minus 5,800 plus 738. 1,64,938. It is your करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर. फिर से राइट करेंगे हम, करेक्ट मीन फाइंड किया, उसी तरह से करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन. करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू S is equal to in root sigma x square by n minus x bar whole square. करेक्ट फाइंड करें, यानी ऑल वैल्यू हम करेक्ट लेंगे. इन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, चेक इट, 1,64,938. Number of observation is 100. X bar, it means correct x bar, 39.3 whole square. Now next, in root 1649.38 minus, using scale C, 39.3 whole square, 1544.49. Now next step, difference find out. In root 1649.38 minus 1544.49, 104.89. out of root 10.2416. So approximate correct standard deviation is 10.24. Okay, so you are completed for question number 6.